तो अभी मैं आ गया हूँ आदियोगी, जहाँ पर अभी हम मेन गेट के सामने हूँ। थोड़ा सा आराम कर रहा हूँ, बस से आया हूँ, आधे घंटे बस से लगा है। और अभी हम क्या करेंगे, पहले आदियोगी घूमेंगे, पूरा प्लेस विजिट करेंगे। और आसपास क्या है, ध्यान लिंगम है, नाग श्रेणी है, चंद्र कुंड है, सूर्य कुंड है, ठीक है, और त्रिमूर्ति। तो ये चीज़ें मैं आज कवर करूँगा, तो आप पूरा देखना और मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा। सबकी टाइमिंग होने वाली है 6 से शाम के 8 बजे तक। और जो लाइटिंग का होता है ना, वो 7 या 7:30 बजे होता है, जो आदियोगी की जो लाइटिंग करते हैं। तो ये सब हम आज देखेंगे। और अभी कितना हो रहा है, अभी 12:30 हो रहा है। तो ये पूरा कवर करूँगा, पूरा घूमता हूँ और आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता हूँ। टाइमिंग आपको पता चल गई है, कितना दूर है, कितना टाइम लगेगा, बस ये आपको बताता हूँ। आदि योगी से आ गया हूँ और ये देखो, यही है ध्यान लिंगम का मेन गेट। तो यहाँ पे अंदर फ़ोन और बैग अलाउ नहीं है, तो हम वहाँ जमा करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और उसके बाद से हम अंदर जाएंगे और ये कैफेटेरिया कुछ खाने के लिए तो खा सकते हैं। और यहाँ पे बैलगाड़ी की सर्विस भी है, देखो यही जो है ना बैलगाड़ी है, और बैल लगती है जाती है, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके लिए। तो मैं जा रहा हूँ, फ़ोन सबमिट करूँगा और 1-2 घंटे अंदर ही रहूँगा। फिर लाइट शो होगा 7 बजे, फिर 7 बजे अंदर जाऊँगा, वो आदि योगी के पास। इधर से हम लोग आए थे ना वहाँ पे। ये देखो भाई, पूरा पहाड़ों के बीचों बीच, ये देखो पूरा पहाड़ पहाड़ पहाड़, वो पूरा दिख रहा, पूरा बादल से पहाड़ घिरा हुआ, ये हमारे आदि योगी पूरा पहाड़ों के बीच में है। तो अनाउंसमेंट हो गई है, 7 बजते ही दिव्य दर्शन चालू हो जाएगा, मतलब लाइटिंग हुआ शो चालू हो जाएगा और मैं आप लोग को अच्छे से दिखाता हूँ। Over 15,000 years ago, a being appeared in the upper regions of Himalayas. No one knew who he was, where he came from. The origins of this spectacular being were unknown. When his ecstasy allowed him some movement, he danced wildly. When intensity peaked, he became utterly still. People saw that he was experiencing dimensions that no one had ever known or able to fathom. His ecstasy and intensity allowed him to transcend his physical form. Witnessing an individual human in union with the cosmos, they called him a yogi, as he was the first one, the Adiyogi.
When his stillness lasted for years on end, curious onlookers melted away. Only 7 seekers remained, as they could not tear themselves away from him. He transmitted the profound science of yoga in its full depth and dimension. He expounded 112 methods of attainment, offering his disciples access to the deepest innards of creation. In this magnificent state of yoga, many mysteries of the created and the uncreated cascaded upon his unbridled wild hair. It was a vision of the very core of the cosmos in all its profundity and magnificence, a vision of the unfathomable mysteries of the universe, a most overwhelming vision the sages and Devi Parvati had ever witnessed.